Okay, so today's topic is friction of pivot and collar bearing. So how friction is developed in pivots and collar bearings that will look. Okay, so first have a look at what is pivot and collar. तो हम सबने शाफ्ट्स देखे होंगे। ओके, हमारी फोर व्हीलर्स में भी आते हैं, काफ़ी सारे मशीन्स में आते हैं। ओके, so these shafts are actually carrying load, okay, or torque. जनरली शाफ्ट इसलिए यूज होते हैं, जो टॉर्क है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए शाफ्ट यूज होते हैं। बट बिसाइड्स डूइंग दिस ट्रांसफर ऑफ टॉर्क, शाफ्ट की एक्सिस की डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लगते हैं। कि यहाँ पे मैंने जो फिगर्स दिखाई है उनमें सब में वर्टिकल डायरेक्शन में शाफ्ट दिखाया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शाफ्ट वर्टिकल ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी हो सकता है। बट शाफ्ट में एडिशनली ये एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है, तो सम फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स थ्रस्ट इज डेवलप्ड इन दिस शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है उसमें थ्रस्ट डेवलप होता है। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट where shaft is ending like this, okay, कुछ बेयरिंग होता है, थ्रस्ट बेयरिंग। ओके, थ्रस्ट होता है उसको कम करने के लिए हम, फ्रिक्शन होता है उसको कम के लिए करने के लिए हम थ्रस्ट बेयरिंग यूज करते हैं। ओके, तो जिस बेयरिंग में ऐसी अरेंजमेंट होती है, ओके, जिसमें शाफ्ट ऐसा है, फ्लैट एंड है, ओके, उसको बोलते हैं फ्लैट पिवोट। अगर एंड हमारा कॉनिकल है शाफ्ट का, देन इसको बोलते हैं कॉनिकल पिवोट। अगर एंड हमारा ऐसा ट्रंकेटेड है, ट्रेपेजॉइडल, एंड उसको बोलेंगे ट्रंकेटेड पिवोट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लोड इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, और शाफ्ट क्या कर रहा है, वो लोड पूरा बेयरिंग के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है ऐसे। इन मैनी एप्लीकेशंस सम अरेंजमेंट इज डन लाइक दिस। ओके, शाफ्ट के ऊपर ऐसा कॉलर बना देते हैं, तो क्या होता है, जो लोड होता है, ये फर्स्ट थ्री केस है, उसमें कैसा होता है, लोड है वो डायरेक्टली यहाँ पे बेस पे ट्रांसफर हो रहा है थ्रू शाफ्ट। बट यहाँ पे क्या होगा, लोड जो है वो शाफ्ट की एक्सिस पे लग रहा है, और हमने एक कॉलर प्रोवाइड किया है शाफ्ट के ऊपर, तो क्या होगा, लोड यहाँ से भी ट्रांसफर होगा। ओके, लाइक दिस, ऐसी अरेंजमेंट होगी। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो कॉलर हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे शाफ्ट का एंड है वो डिफाइंड नहीं है। ओके, वो शाफ्ट है वो कहीं पे एंड नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू है। ओके, सो ऐसे कंडीशन में जो एक्शियल लोड लगता है उसको रेजिस्ट करने के लिए, बिकॉज क्या होगा, अगर ये मेरा शाफ्ट है, उसको मैंने रोटेशन के लिए डिजाइन किया है, बट उसके ऊपर एक्शियल लोड भी लगता है, तो क्या होगा, ये शाफ्ट है वो पूरा शाफ्ट ऐसे आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। So to stop that displacement, I am providing the collar over here. यहाँ पे मैं कॉलर प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पे बेयरिंग रख दूंगा, लाइक दिस। तो क्या होगा, ये कॉलर जो है वो बेयरिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा और शाफ्ट को इस डायरेक्शन में मूव होने से, एक्शियल डायरेक्शन में मूव होने से रोकेगा। Okay, so for that purpose also collar is provided, or you can say to transfer the axial load to the bearing, these collars are provided. तो कई बार अगर लोड ज्यादा होता है, एक्शियल लोड अगर ज्यादा होता है, then we can use multiple collars also like this. Okay, you can see in this last figure we have used 3 collars. तो अगर एक्शियल लोड ज्यादा होगा तो एक कॉलर सफिशिएंट नहीं होगा इस शाफ्ट को एक्शियल डायरेक्शन में मूव होने से रोकने के लिए। तो उस केस में हमें मल्टीपल कॉलर्स यूज करने पड़ते हैं। एंड वी ऑल नो दैट दिस शाफ्ट्स आर एक्चुअली रोटेटिंग। ये शाफ्ट है, सारे सारे शाफ्ट जो है वो रोटेट हो रहे हैं।
So as these are rotating and this bearing, this hatching portion is bearing, okay, it is stationary. So at the interface of this shaft and bearing, यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, जहाँ पे एक सरफेस में भी स्टेशनरी है और दूसरी सरफेस मूव हो रही है, रोटेट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर फ्रिक्शन डेवलप होगा, और फ्रिक्शन हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो शाफ्ट अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। So in this topic we will find how much amount of frictional torque is there. Okay, अब ये फाइंड करना क्यों जरूरी है? बिकॉज फ्रिक्शनल टॉर्क मैं फाइंड कर लूंगा तो उसके ऊपर से मुझे पता चलेगा कि मुझे अगर इस मशीन को रोटेट करना है, इस शाफ्ट को रोटेट करना है, तो कितना पावर चाहिए होगा, कितना पावर मुझे सप्लाई करना पड़ेगा। So for that purpose we are finding the frictional torque. So this kind of arrangement is called as pivots, and this kind of arrangement where collars are provided are called collar bearing. In modern practice, ball and roller thrust bearings, okay, this is a kind of bearing, thrust bearing, which is taking axial load, are used when power is being transmitted and when thrusts are large, as in case of propeller shaft of ships. Okay, बड़ी बड़ी जो शिप्स आती है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, एक्शियल और थ्रस्ट बेयरिंग, और सम स्पेशल पर्पज मशीन्स में भी यूज होते हैं। Now a little consideration will show that in a new bearing, अगर हमारा बेयरिंग नया है, हमने अभी परचेज किया है, अभी इंस्टॉल किया है, the contact between the shaft and the bearing may be good over the whole surface. Okay, जब हम बेयरिंग नया लेते हैं, यहाँ पे इस बेयरिंग की बात कर लो या ये पिवोट बेयरिंग की बात कर लो, अगर मैंने न्यूली इंस्टॉल किया है तो ये सरफेस कैसी होगी, नई होगी। तो कांटेक्ट जो होगा वो प्रॉपर कांटेक्ट होगा, पूरी सरफेस के ऊपर कांटेक्ट होगा यहाँ पे बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में। So that is what written over here. The contact between the shaft and bearing may be good over the whole surface, or in other words we can say that the pressure over the rubbing surface is uniformly distributed. जो ये शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट के थ्रू प्रेशर लग रहा है, here some load is acting in axial direction, and because of this load हम जानते हैं कि अगर एक सरफेस के ऊपर मैं लोड लगाता हूँ, ओके, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पे और उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, आप अपना हैंड, अपना हाथ भी है वो टेबल के ऊपर रख के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये सरफेस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। So because of this axial load, some pressure is being developed at the interface over here. So this, if our bearing is new, then this pressure will be uniformly distributed over whole surface, means यहाँ से यहाँ तक पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्रेशर। इस केस में भी ये जो जितना भी कांटेक्ट है उस कांटेक्ट में प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कब? जब हमारा बेयरिंग नया होगा, व्हेन आवर बेयरिंग इज न्यू। बट व्हेन द बेयरिंग बिकम्स ओल्ड, जब बेयरिंग पुराना हो जाता है तब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वॉर्न आउट होना शुरू हो जाता है, वियर होना शुरू हो जाता है। सो एट दैट टाइम all parts of the rubbing surface will not move with same velocity. जब हमारा बेयरिंग पुराना होगा तो थोड़ा वॉर्न आउट होगा, वियर होगा उसके अंदर, तो क्या होगा कि उसका वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट बेयरिंग, ओके, सो इट इज वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। Because the velocity of rubbing surface
increases with the distance from the axis of bearing. Now what is this? Velocity of rubbing surface increases with the distance from the axis of bearing. Now what is this? Suppose consider there is a wheel whose radius is small r and it is rotating with angular velocity omega. So now if I want to find the velocity of this point, okay, the velocity of this point will be in this direction. So v is equal to omega into r. We know this relation. So we can say that velocity of any point is proportional to distance of this point from center of rotation. ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर उसके ऊपर डिपेंड करता है. मीन्स जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ तो वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. And as I will decrease the value of r, if I substitute the value of r is equal to 0, means at this center, then velocity of center will be 0. Okay, so that is the vice versa. Velocity is proportional to the distance from the axis. This means that wear may be different at different radius. Okay, so what this is stating? Okay, as I stated, okay, if I draw the velocity diagram of this shaft, then it will look like this. This is the velocity diagram. So we can see here that at this point velocity is maximum. At this point velocity is somewhat less. At this point velocity is further smaller. Okay. Because in this direction we are reducing the value of r and in this direction we are increasing. Okay. So as we reduce the value of r, we are reducing velocity. So now you can see, अब आप इसको एक शाफ्ट एज्यूम करो कि ये एक शाफ्ट है और रोटेट हो रहा है. तो यू कैन सी शाफ्ट में या जो पेरीफेरी है वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ पे कम वेलोसिटी है. सो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट वेलोसिटी है. So now because of these different velocities, the wear will also be different at these locations. Okay, यहाँ पे wear कम होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे wear और भी ज़्यादा होगा because velocity ज़्यादा है. आप सिंपली ले सकते हो एक एग्जांपल, अगर आप एक पत्थर को ज़्यादा तेजी से घिसेंगे टेबल के ऊपर तो वियर ज़्यादा होगा, टेबल के ऊपर ज़्यादा डैमेज होगा. अगर आप उसी पत्थर को थोड़ी कम वेलोसिटी से रब करते हैं टेबल के ऊपर तो वियर जो होगा वो कम होगा. सो लाइक यू कैन कोरिलेट विद दिस. So this is what is saying wear may be different at different radius and this causes to alter the distribution of pressure. Now because wear are different, okay, अगर मैं अब इस शाफ्ट को साइड व्यू से देखूंगा तो मेरा शाफ्ट का जो फेस है वो ऐसे अनइवन हो जाएगा. ओके, कहीं पे वो ज़्यादा अप होगा, कहीं पे डाउन होगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विल गेट डिस्टर्ब. प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. सो दिस थिंग यू कीप इन माइंड दैट इफ आवर बेयरिंग इज न्यू then pressure is uniformly distributed and if our bearing is old then pressure will not get uniformly distributed. In worn out bearings wear will be uniformly distributed. So for study purpose of friction in these bearings we will assume these two cases. First one, the pressure is uniformly distributed throughout the bearing surface, that is for newly installed bearing. And second, the wear is uniform throughout the bearing surface, that is this second case that I just explained to you. तो इन दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे हम
फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए। So now let's have a look at the flat pivot bearing. We will do the analysis of friction in this flat pivot bearing. Now flat pivot bearing कैसा होता है इस फिगर में इंडिकेट किया है। Okay. So this is the shaft and this hatched portion in this figure is actually flat pivot bearing. और ये जो है यहाँ पे वो इसका बॉटम में से व्यू दिखाया है ऊपर की तरफ। So that is the cross section of the shaft, circular है। So when a vertical shaft rotates in a flat pivot bearing, also known as footstep bearing, the sliding friction will be along the surface of contact between the shaft and the bearing. Means अगर ये shaft यहाँ पे rotate होता है तो यहाँ पे जो जहाँ पे contact है ये flat pivot bearing और shaft के बीच में यहाँ पे friction generate होगा। So let's consider W is the load transmitted over the bearing surface. Okay, कोई axial load लग रहा है W. Capital R is the radius of the bearing surface. Okay, radius of the bearing surface means इतना radius. It is actually equal to radius of shaft, you can say. Small p is the intensity of pressure per unit area. Okay, यहाँ पे जो pressure लग रहा है उसका value है. Mu is the coefficient of friction. We are knowing that the shaft is rotating and bearing is stationary. Okay. So relative motion is there between these two components. So friction will be there. So mu is the coefficient of friction. And remember the equation of friction. Friction is actually equal to, frictional force is equal to mu into normal load. ऐसी सरफेस थी और उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा था। So if weight of block is W, then normal load is Rn, which is equal to W. So in this case, friction is equal to mu into Rn. So keep this thing in mind. And we will consider these two cases, uniform pressure and uniform wear. So let's have a look at first case of uniform pressure. Now uniform pressure means हमारा bearing जो है वो नया है, अभी इंस्टॉल किया है। So in that case, uniform pressure will be happening. So pressure because of this load W is equal to, we know that pressure is equal to force by area. तो यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये जो शाफ्ट है उसका एरिया लेना है। तो शाफ्ट का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। नाउ कंसिडर दिस स्मॉल रिंग ओवर हियर। ये जो शाफ्ट है पूरा उसके ऊपर एक स्मॉल रिंग कंसिडर करना है जिसका रेडियस है स्मॉल आर और इस रिंग का थिकनेस है डी आर। तो फर्स्ट वी विल एनालाइज द फ्रिक्शन ऑन दिस स्मॉल रिंग। फर्स्ट हम इस स्मॉल रिंग पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो एनालाइज करेंगे। देन उस वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक, कैपिटल R तक। तो हमको टोटल जितना फ्रिक्शनल टॉर्क है वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंसिडर द एरिया ऑफ दिस रिंग इज 2 pi r into dr. नाउ द लोड एक्टिंग ऑन दिस रिंग, ये जो रिंग है उसके ऊपर कितना लोड लगेगा, वी नो दैट लोड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो dw डेल्टा w इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग इज 2 pi r dr। ध्यान रखना अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्मॉल रिंग है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो कंप्लीट एरिया का वैल्यू नहीं ले लेना है, पाई आर स्क्वायर में ही सब्स्टिट्यूट कर देना है। हम पहले ये स्मॉल रिंग का कंसिडर कर रहे हैं। तो एरिया इज 2 pi r dr।
Now, because of this load, what amount of friction will be happening? We know that friction is equal to mu into perpendicular load. So यहाँ पे perpendicular load कौन सा होगा? ये W वाला, ये मीन्स ये वाला लोड. So mu into delta W. So simply substitute the value of delta W over here. So mu into P into 2 pi R dr. तो सिंप्लीफिकेशन किया है यहाँ पे 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू आर इंटू डी आर. तो इतना जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर. So because of this frictional force, now this shaft is rotating. Okay, so torque will be having. Okay. So here frictional torque will be happening. So frictional torque, we know that torque is equal to force multiplied by perpendicular distance. तो हम अभी ये स्मॉल रिंग के ऊपर बात कर रहे हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर. So substitute the value of Fr over here and do the simplification. So you get 2 pi mu P into R square into dr. That is the torque, frictional torque acting on this ring. जो हमने रिंग कंसिडर की है उसके ऊपर इतना फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा है. Now if I want to find the total torque acting on the shaft surface, then I have to integrate it between 0 to capital R. Okay, so let's integrate it from 0 to capital R. तो यहाँ पे बाकी सब जो है वो कांस्टेंट है, ओनली R is the variable. तो R square into dr will be over here. So R square का इंटीग्रेशन क्या होगा? R cube by 3. So R cube by 3 0 to capital R. Put the limits in this. So you get 2 by 3 pi mu P into R cube. So that is the total frictional torque. If you further simplify it, substitute the value of P जो हमने शुरुआत में डिराइव किया था, P इज इक्वल टू W बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, वो सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन देंगे. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क. टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू 2 बाई 3 म्यू इंटू W इंटू कैपिटल R. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये शाफ्ट है वो कितना टॉर्क लगेगा यहाँ पे, उसका 2/3 जो है वो फ्रिक्शन में बर्बाद हो जाता है. ओके, तो 2 बाई 3 म्यू W इंटू आर. So if once we find this frictional torque, then we can find the power required to rotate this shaft. So we know that power is equal to T into omega and omega is equal to 2 pi n by 60. तो ऐसे हम कितना पावर का मोटर रखना है इस शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So this much power will be required to overcome this friction between these two elements over here. Okay, so simple procedure है, मैं क्विकली बता देता हूँ. यूनिफॉर्म प्रेशर के अंदर क्या करना है? फर्स्ट एक एलिमेंटल एरिया लेना है. उसका एरिया 2 पाई आर दिया है, उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है वो फाइंड कर देंगे. देन बिकॉज ऑफ दिस लोड हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज हैपनिंग, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू लोड. उससे हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा और फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर से हम फ्रिक्शनल टॉर्क फाइंड कर सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाइंग फोर्स विथ रेडियस r. फिर क्या करेंगे? 0 टू r तक इंटीग्रेट कर देंगे. Then we get the final value. So frictional torque 2 by 3 is equal to mu into W into R.
It is very important formula for exam point of view and example point of view also. Okay. आपको डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं या फिर इसके बेसिस पे एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि मेरा लोड अगर इतना लगता है तो मुझे कितना पावर चाहिए होगा. At that time you have to find this, use this equation if new bearing is given. But what to do if old bearing is given? So at that time we have to consider uniform wear case. अब यूनिफॉर्म वियर केस क्या बोलता है कि प्रेशर इज नाउ नॉट कांस्टेंट सोलेली. प्रेशर जो है वो अकेला कांस्टेंट नहीं रहेगा, वियर जो है वो कांस्टेंट रहेगा. एंड वियर जो ये जो शाफ्ट का वियर होगा या बेरिंग का वियर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है, मीन्स कितना प्रेशर यहाँ पे एक्ट हो रहा है, और ये शाफ्ट जो है वो कितनी वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, या फिर ये व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस टू सरफेसेस. तो वियर जो है वो P इंटू वी इसके मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड होगा. एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जस्ट शोड यू इन प्रीवियस स्लाइड कि वेलोसिटी है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है. अगर रेडियस हम बढ़ाएंगे शाफ्ट की तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है सर्कमफरेंशियल, वो भी बढ़ेगी. अगर रेडियस हम घटाएंगे तो वो भी घटेगी वेलोसिटी. So you can say for uniform wear case you have to consider P into R is equal to constant, means pressure and radius multiplication of these two is constant, or you can write in this way also, pressure is equal to constant divided by R. Now we will follow the same procedure that we followed previously. First, let's consider elemental ring over here. Okay, so load acting on ring is P into 2 pi r dr, same as previous case. Now here is the twist. We are substituting the value of P. Okay, so here we are substituting the value of P from this relation. ये सेकंड केस के लिए ही है. ओके, फर्स्ट केस में ये अप्लाई नहीं करना है. तो P इज इक्वल टू C बाई R over here. So we are getting delta W is equal to, actually this R will get cancelled. Okay, so 2 pi C into dr. So total load transmitted to the bearing. Okay, this is the additional step. Total load transmitted to the bearing. तो अगर डेल्टा डब्ल्यू जितना लोड यहाँ पे एक्ट करता है इस रिंग के ऊपर, तो पूरी सरफेस पे कितना एक्ट करेगा. विल टेक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R, एंड यू सी 2 पाई एंड C these all are constant, so integration of dr is actually small r. So we are substituting it, so 2 pi C into R. So we can say that value of this constant C is actually equal to W by 2 pi R. The value of this constant is W by 2 pi R. So now let's find the torque. So torque, we know that torque is actually frictional force multiplied by radius. And frictional force, we know that frictional force mu is equal, F is equal to mu into delta W into small r. So what is the value of delta W? Mu delta W is equal to 2 pi C dr. So 2 pi C dr into r. So that is this equation. 2 pi mu C R into dr. So this is how we can find the torque acting on this ring. Okay, this dr is there, so what this indicates, this torque is acting on this ring.
So total torque acting on this surface will take integration from 0 to r. So in this case, this 2 pi mu c, this thing is constant. So integration of r will be r square by 2. So put the limit in there. So finally, after simplification, we get pi mu c into r square. Now in this equation, we will replace this c with w by 2 pi r, जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था फर्स्ट c इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 pi r, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. So finally, our equation of frictional torque for uniform wear will be 1 half mu into w into r, mu into w into r. So if you want to memorize this equation, so simply you know the equation of torque is equal to frictional force into, sorry, torque is equal to frictional force into radius. और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू डब्ल्यू जितना इंटू रेडियस. यहाँ पे वो एज इट इज आ जाएगी. और यूनिफॉर्म वियर के अंदर कितना होगा, 1/2. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग ओनली, 1/2. अगर यूनिफॉर्म प्रेशर है तो 2/3 हो जाएगा, यूनिफॉर्म वियर है तो 1/2 है. So these are the two cases. Okay, from this torque you can also calculate the power required for this case. Means अगर हमारा बेरिंग पुराना हो गया है तो उसके अंदर कितना पावर रिक्वायर्ड रहेगा शाफ्ट को रोटेट करने के लिए. So you can find this from torque. So this is how you have to deal with uniform pressure and uniform wear case. These are important for clutch portion also. Okay, we'll use the same concept in clutch also and collar also. Okay, so if you have any doubt, then clear it right now, because these concepts are going to penetrate in further more theories. So that is the flat pivot bearing, or you can say torque or friction acting in flat pivot bearing.